Hello everyone. Today we will perform some programs related to functions, and all of you please try to understand the concepts of function with some practical examples. Okay, so first of all, here is an example like write a program to calculate simple interest using a function. Okay, that can receive principal, time, and rate, and return calculated simple interest. Okay, so in this we can specify some default values for rate and time. The values are given, like for rate the value is 10% and for time the value is 2 years. Okay, and principal amount you can enter as per your choice. So if we write this program with function definition and declaration, like first variable is principal, then second time variable is 2, the value of time is already given, then rate is equal to 10%. Okay, so this function will return principal multiply by rate multiply by time. Okay, now as I have already told you that outside of the function all program content is the main program. Okay, so here I am mentioning the comment main means our main part of this program will start from here, and upper two lines are the part of functions. Here I am taking a variable principal with the name PRIN. ठीक है, तो प्रिंसिपल वेरिएबल की वैल्यू यूजर ने इनपुट करनी है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. अब इसके बाद एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट rate of interest and time values is. So simple interest, जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे देन उस टाइम पर मैंने एक इंटरेस्ट नाम से फंक्शन को कॉल किया विद माय वेरिएबल प्रिंसिपल. So the abbreviation of principal is PRIN. After the working of all these uh, we can print our answer like rupees, simple interest, then here I am taking another variable ROI, then float input. ये मत means ROI वेरिएबल की वैल्यू भी यूजर से इनपुट करेंगे. There is no need to take time in fractional part, so in this we can take int. Okay, and in ROI we can take float, because the rate of interest is 10 like 10%, 15%. So to calculate the percent, we, uh, we are already dividing it into divided by it 100, and we have already mentioned the rate of interest in decimal part. Okay, so 10% means 10 divided by 100, so the value is 0.10. That's it.
am mentioning in short, like simple interest. Okay. Now we will save this program. So the output of this program is, first of all, it will take the value from user. So here is a message: enter principal amount. Suppose in this we enter 6700. Okay, then simple interest with default ROI and time value is rupees 1340. Okay, then now enter rate of interest. Suppose in the at this time I enter 8, then enter the time. If I enter 3, then it will give the answer 1608. Okay, so what is the meaning of output? सबसे पहले हमने एक प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया, देन एज पर आवर गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम ये आपको सिंपल इंटरेस्ट एक डिफॉल्ट आरओआई के थ्रू और डिफॉल्ट टाइम वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करेगा, दैट इज 1340. ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने यूजर के थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड एंटर करवाया ऑन द सेम प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू चेंज कर दी, लाइक टाइम पीरियड कर दिया 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया 8 ईयर, सॉरी 8%. देन ये आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आंसर प्रोवाइड कर रहा है 1608. ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है. अब ये प्रोग्राम हमने जब बनाया तो ये रन कैसे हो रहा है? सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया इंटरेस्ट नाम से, और ये 3 वेरिएबल्स हैं जो उस फंक्शन में हम यूज करेंगे. ओके, स्टार्टिंग स्टेप में हमने वेरिएबल की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया, लाइक प्रिंसिपल यूजर इनपुट करेगा और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया. ओके, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने वैल्यू रिटर्न कराई है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. ओके, अब मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हमने एक प्रिंट वेरिएबल प्रिंसिपल वेरिएबल के लिए यूजर से वैल्यू इनपुट कराई और यूजर ने एक प्रिंसिपल अमाउंट एंटर किया. उसके लिए एक सपोर्टिंग सुटेबल मैसेज हमने प्रिंट किया. देन हमने एक मैसेज प्रिंट किया कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर क्या रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो दिस इज द आउटपुट फॉर्मेट. देन सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट टाइम हमने कैलकुलेट किया विद द कॉलिंग ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन. ओके, हमने यहाँ पर ये स्टेप यूज किया. देन जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको हम प्रिंट करेंगे. आफ्टर दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर से हम इनपुट करा रहे हैं, उसके लिए हमने आरओआई वेरिएबल लिया. देन टाइम हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, उसके लिए हमने टाइम वेरिएबल लिया. देन फाइन एक सिंपल स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया सिंपल इंटरेस्ट, और कैलकुलेशन करने के लिए हमने SI2 वेरिएबल में इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल करके वैल्यू असाइन की है, और उसके बाद फाइनल आंसर प्रिंट हुआ है. ठीक है, तो प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले यूजर से वैल्यू इनपुट करेंगे तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा प्रोग्राम. ठीक है, यहाँ पर यूजर ने वैल्यू इनपुट की, ये एक मैसेज प्रिंट हुआ एज इट इज. देन SI1 जब कैलकुलेट होगा तो इंटरेस्ट फंक्शन कॉल हुआ. तो इंटरेस्ट फंक्शन जब कॉल हुआ तो PRIN वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर हमने इस आर्ग्यूमेंट को पास किया, तो PRIN की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी? जो यूजर ने इस स्टेप में एंटर की थी. क्लियर? तो ये फंक्शन कॉल होगा. तो प्रिंसिपल वैल्यू 6700, बाकी दो वैल्यू हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं. तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ से रिटर्न होगा. जो भी आंसर रिटर्न होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया? SI1 में. ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली रुपीज और SI1 वेरिएबल को प्रिंट किया, तो हमारा आंसर आ गया ₹1340. ओके, देन आरओआई हमने यूजर से इनपुट किया, टाइम इनपुट किया,
अब उसके बाद हमने एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट किया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब SI2 वेरिएबल के लिए फिर से एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया। क्लियर। सबसे पहले यूजर से वैल्यू इनपुट करेगा, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर टाइम्स इन ईयर्स, देन उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये एज इट इज मैसेज प्रिंट हुआ, ये मैंने कट शॉर्ट कर दिया था। गिवन एग्जांपल में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्टिंग लाइंस भी हैं, तो यू कैन चेक और यू कैन टाइप फ्रॉम हियर। ओके, देन SI2 वेरिएबल के लिए जब इंटरेस्ट फंक्शन कॉल हुआ, देन PRIN। अब यहाँ पर PRIN हमने पुराने वाला लिया और टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यूजर से इनपुट कराया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजर यहाँ पर एक नॉर्मल परसेंटेज की फॉर्म में एंटर करता है, बट हमने उसको स्टार्टिंग में ही डिवाइड बाय 100 कर दिया। ओके, और टाइम यूजर जो इनपुट करेगा वो एज इट इज आएगा। क्लियर। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, मींस जब ये इंटरेस्ट फंक्शन कैलकुलेट हुआ, तो वापस से कंपाइलर इस फंक्शन की डेफिनेशन को रीड करेगा और जो भी सपोर्टिंग और सुटेबल वैल्यूज हैं वो एक रिलेवेंट प्लेस पर पुट करेगा आफ्टर दैट कैलकुलेशन, एंड आफ्टर दैट जो रिटर्न होगा वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू SI2 में स्टोर हो गई और SI2 वेरिएबल को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है। क्लियर। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका रन हुआ है। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हमने एक सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को फंक्शन के थ्रू परफॉर्म किया है। ओके, और यहाँ पर हमने दो तरीके से इसको परफॉर्म किया है और जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली आप इस प्रोग्राम को चेंज कर लेंगे। लाइक आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट टाइम इनिशियल वैल्यू से काम होगा और सेकेंड टाइम हम वैल्यूज को इनपुट करेंगे। इन केस कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा तो आप इस प्रोग्राम में अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। So I hope it is clear to you. Thank you.